बात ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के दो प्रमुख अखबारों में छपी रिपोर्ट की। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, इन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत की ताकत का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर दो अमेरिका के इन दोनों अखबारों में जो कुछ लिखा गया है वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का बेहद सटीक जवाब है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव में पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और एयरफील्ड्स को निशाना बनाने में भारत की स्पष्ट बढ़त दिखाई पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी से यह पता चलता है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान की सुविधाओं को स्पष्ट नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने भुलारी एयरबेस और नूरथान एयरबेस पर सटीक निशाना बनाया है। उधर वॉशिंगटन पोस्ट भी देख लीजिए, उसमें एक्सपर्ट ने लिखा है कि भारतीय हवाई हमलों ने पाकिस्तान के कम से कम 6 हवाई क्षेत्रों में रनवे और संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेज का जिक्र करते हुए लिखा कि भारत के सटीक हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली 2 मोबाइल इमारतें भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अखबार के मुताबिक भारत ने कुछ जगहों पर 100 मील अंदर घुसकर हमले किए हैं। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there's a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because, as a military, it's incompetent. And so, is Asim Munir going to keep his job? Is the ego of Pakistani generals going to trump the future strength and well-being of all of Pakistani society? Basically, Pakistan needs to clean house, but it's an open question whether they are too far gone to do that. I think the operation has been pretty successful from as best as I can understand it, which is not the impression that if you look at the more global media, it has been less than supportive of India, I think. But I see this, and that's what I said in that social media post that I put out. I think this was India striking a blow for civilization, actually. It was a lot more than just the conflict with Pakistan. Because, and this is something I said at the UN back in 2018, I consider Pakistan to be a failed state, a terrorist incubator. And so it was good that India moved against it. I was disappointed that President Trump intervened and tried to get a ceasefire. I didn't think there was any need for a ceasefire. Here, that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit and heavily hit at that, and then particularly these massive, major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit. Then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles. But in this case, all of a sudden, look, there is a video, Mushaf Air Base, nuclear weapon storage complex, boom, directly at one entrance, then another explosion directly at the other entrance. This means that these generals in New Delhi felt so safe. It is safe to strike such targets. And this means Pakistan is defeated. This is a clear-cut victory for India. It's as simple as that. India then opted to start striking nuclear storage facilities. And this means this is game over. We hit the entrances into this. If there is second entrance, we hit that entrance as well. Mm-hmm. And that way, we are denying Pakistan the capability to assemble its nuclear weapons, put them on its aircraft or missiles and launch them at India. So this is, an absolutely new dimension of this conflict, so to say. And from now on, Pakistan will really have to think very, very hard
about sending terrorists to India again. प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने झूठ बोलने के जितने रास्ते हो सकते थे, प्रोपेगेंडा फैलाने के जो रास्ते हो सकते थे, उन सारे रास्ते पर चला पाकिस्तान। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन रह नहीं पाता, और यही कुछ हुआ है। भारत ने क्या कार्रवाई की, कितना डैमेज किया, वो सब अब सामने है। सिर्फ भारत के लोग नहीं मान रहे, अमेरिका के अखबार, वहां के जो पत्रकार हैं वो ये मान रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, आप जानती ही हैं, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दिन नहीं पाता है। और पाकिस्तान की कहानी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि उन्होंने जितनी जल्दी अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जैसे शोर मचाना शुरू कर दिया, उसी में कहीं ना कहीं ढोल में पोल थी। क्योंकि जिस ढोल को वो बजा रहे थे, उस ढोल के अंदर पोल ये निकली कि जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजरी सामने आई हैं, जैसे जैसे अब वो डिटेल सामने आ रहे हैं, दुनिया ये चीज जान रही है, दुनिया इस चीज को स्वीकार कर रही है। टॉम कूपर, जिनका इंटरव्यू टीवी टुडे ने चलाया, आपने भी थोड़ी देर पहले प्ले किया, वो दुनिया के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट्स हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजी, जिसकी तस्वीरें इंडिया टुडे आज तक ने भी चलाई, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में नजर आ रहा है, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के रनवे के ऊपर गड्ढा नजर आ रहा है, रहीम यार खान के अंदर गड्ढा नजर आ रहा है। इसके अलावा पसरूर के अंदर रडार स्टेशन उड़ा हुआ नजर आ रहा है। स्कार्दू के अंदर जो एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं वो ध्वस्त नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के डैमेज अब दुनिया देख रही है। क्योंकि जब भारत कह रहा था, शायद भारत ने अपनी जीत का उतना हल्ला नहीं मचाया, लेकिन हमने डिसाइसिवली एक्ट किया। जैसे जैसे दुनिया वो तस्वीरें देख रही है, सैटेलाइट्स के ऊपर वो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वैसे दुनिया भी इस चीज को मान रही है कि पाकिस्तान को जबरदस्त चोट तो लगी है। ये बात अलग है कि आसिम मुनीर इस बात में मसरूफ हैं कि आखिर उन आतंकवादियों के घावों पर मरहम कैसे लगाए जाए, उनको इमदाद कैसे दी जाए, उनको राहत और पैसा कैसे दिया जाए, क्योंकि उनकी जान तो उनमें बसती है, उन आतंकवादियों में बसती है। तभी तो मरकज तैयबा बनाया जा रहा है, मरकज सुभान अल्लाह को वापस से खड़ा करने की कोशिश हो रही है, एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है, सांत्वनाएं दी जा रही हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि अगर ये आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पलट गए, बंदूकें उठा ली, तो फिर पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे जो किले हैं वो ढह जाएंगे। शायद इसीलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है। आपने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स की का जिक्र किया। अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, शुक्रिया प्रणय, वैसे तमाम जानकारी सबके सामने देखिए खुलकर ये चीज हो चुकी है।